Play Store. I'm going to make a new concept of C programming, and in this video I will show you one by one topics of C programming languages. Today I am going to create a program how to display a message using printf function. So here now I'm going to create here hash include stdio.h. This is the header file. In the C programming, there are different types of header file, and it is only used as per our requirement. So these both header file are very important for daily basis and daily basis function using .h. तो अभी इसमें क्या होता है, ये जो हेडर फाइल है ये इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है. stdio.h ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एंड कोनाम मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट. तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप जो भी चीज़ है यूज़ कर रहे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि फंक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं. वैसे नॉर्मली दो टाइप है, लेकिन उसके यूजेस कैसे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. कुछ होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन और कुछ होते हैं यूज़र डिफाइंड. तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट, अभी मैं जैसे सपोज printf यूज़ कर रहा हूँ, सो ये प्री डिफाइंड फंक्शन हुआ, रेडीमेड फंक्शन हुआ, जो हम ऑलरेडी ऊपर के हेडर फाइल से यूज़ कर रहे हैं stdio.h से. ठीक है. सो दिस इज द printf फंक्शन. अब देखिए printf फंक्शन में हम जो भी मैसेज लिख रहे हैं वो मैसेज आपका डबल कोट में होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिखा हूँ हाय. अब चाहे सिंगल लाइन सेंटेंस लिखो या फिर आप मल्टी लाइन लिखो, आपको आपके हिसाब से यूज करना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज अवर फर्स्ट lecture video about how to print a message using printf function. So finally ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है. अब इसको हमको चेक करना है एरर है या नहीं. तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे. सो दैट्स इट. देयर इज नो एनी एरर, वार्निंग ज़ीरो है एंड एरर भी ज़ीरो है. फाइनली हम जाएंगे रन पर और इसको रन करेंगे कंट्रोल F9 से. ये आ गया हमारा मैसेज. तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम हाउ टू show the message using printf function in C programming. I will give the one by one introduction about what is header file, what is main function, and what is getCH function, what is printf function in next lecture video. Have a good day all of you. I think hope you will get nice information from me. Okay. Have a good day all of you.